मंडियों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। 1,32,000 तमाशाई की गुंजाइश वाले स्टेडियम में मौत का सन्नाटा छा गया। भारतीयों को सांप सूंघ गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड टूटे, कई नए नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत बने। जनूबी अफ्रीका का 428 एक इनिंग्स का सबसे ज्यादा टोटल, डिकॉक 4 सेंचुरियों, कोहली 711 रन, रोहित शर्मा 28 छक्कों के साथ टॉप छक्केबाज रहे। फखर जमान 11 छक्कों के साथ टूर्नामेंट के सबसे नुमाया नाम रहे। मोहम्मद शामी 23 विकेटों के साथ बेस्ट बॉलर करार। और बराह रास्ता आपको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां पर स्टीव स्मिथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। It's been a pretty big year for us, obviously winning the Test Championship and then this, so it's been great fun. Congratulations, Steve. Well done. That's Steve Smith there. Just spin round this way because you'll see the back of a couple of big boys. Just pan round that way. I can see Mitchell Stark, I can see Mitchell Mark, and I can see Nasser Hussain. Some big, tall smiles over there, Nass. Yeah, I've got the two Mitches with me. Mitch, let's start with you. When I say Mitch Marsh, it's been an emotional 3 or 4 weeks for you. Sum up your emotions right now. Pure elation. I've said to a few of the boys just earlier, it's been the hardest 8 wickets of cricket I've ever been a part of. I think we were 0-2 and Sri Lanka were none for 120, so that feels like a lifetime ago. But to be here, this group, it's unbelievable. It is unbelievable. And Mitch, for you, can I just ask about your captain? Because that was a brave decision today in a World Cup final to bowl first. He just about had the perfect game there, didn't he, Pat Cummins? He was phenomenal. I think he's been phenomenal all tournament in his decision-making, his leadership. At times he's needed to step up with the ball and it's been a bit flat. He's been phenomenal for us and, that's just capped off an unbelievable 8 weeks for this group and I haven't got any words left. Say, great 8 weeks. It's been a sensational year. World Test champions, retain the Ashes, and the serious stuff from a squad of players. Yeah, between Pat, Ron, all our coaching staff, all our players across the formats, it's been an incredible winter. This is, I don't think you could write a script to top the winter that we've had to win a World Cup in India. It's been a fantastic 8 weeks. It's been tough, but gee whiz, it's been bloody successful and bloody enjoyable. Well done. Many congratulations. Thank you. Thanks to the Australian players, thanks to the boys down there doing a great job. This is the situation, folks, here. Australia have won it. India were asked if they managed 240. We thought that would be competitive, but in the end, Australia were superb in their run chase. 241 for 4. They've won the World Cup by beating India by 6 wickets. Time now to get down to the player of the match, who's with ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त देकर क्रिकेट के आलमी कप में फतह हासिल कर ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। It's been a wonderful year for you. Yeah, not in a million years. What an amazing day. So just thrilled to be a part of it. And well, you came into the World Cup not fully fit, but the team management, everyone wanted you in the squad for a reason, and we all know now the reason for it. Yeah, it's a lot better than sitting on the couch at home. So very lucky that everything went well and I was able to get back here and the support that the boys showed. And I didn't think that this was going to happen, so or not contribute in the way I played in the first sort of 20 balls. I was a little bit nervous, but Marnus played exceptional. It was awesome to bat with him. He soaked up all the pressure, and it was just an amazing partnership. Yeah, 241 didn't look like a huge target, but you had to get those runs against the best attack in the world in this tournament. 47 for 3, and India would have felt they're right in the game, but your innings. Tell us about your state of mind at that stage, and how did you sort of align everything to take on India? Yeah, I felt like the way that Mitch Marsh come out and took the game on, albeit didn't go on with it, but he sort of set the tone, and
that was the energy that we wanted, and we knew that the wicket may get tough. It was a great decision, obviously, to bowl first when we win the toss, and I felt like the wicket got better as the day went on. It took a little bit of spin, but yeah, all the reasons why we did what we did at the toss all paid dividends. So yeah, nice to be part of it, nice to play a role in that, and yeah, what's going to be an amazing couple of days now. You played superbly in the second half of the match, but the big turning point right at the start, the wicket of Rohit Sharma and your unbelievable catch running back. You could see Australia made a very strong statement very early. They were right into this game and they were going to play like champions, not giving India an inch. He's probably the unluckiest man in the world. Yeah, again, it's something that I worked hard on. Yeah, I couldn't imagine getting 100, couldn't imagine probably holding on to that one. Again, nice to hold on to something that's important, and you want to look after your teammates, you want to contribute. To be able to do that on a big stage in front of a full house under all that pressure is a nice thing that I'll be able to look back on later in my life. Ricky Ponting, Adam Gilchrist and now Travis Head, Australian players who've got 100 in the World Cup finals. I'm definitely third on that list, so no, it's a nice one to join. Again, just nice to be here. It's nice to contribute. Nice to, yeah. I just said to the boys, I'm looking forward to the reunion. Well, Travis, well done. This is a huge moment for you and your country, and well done tonight. Thank you very much. Cheers. Yes, the reunion will be. बाजी का मुजाहरा किया गया ट्रेविस हेड की जानिब से और उन्होंने सिर्फ 120 बॉलों पर 137 रन बनाए, 15 चौके और 4 छक्के उनकी जानिब से लगाए गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत की राह हमवार की। 47 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन फिर उनकी जानिब से मार्लस लेबुशेन के साथ एक बेहतरीन शराकतदारी कायम की गई और मैच विनिंग पार्टनरशिप उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए और भारतीय बॉलर्स को विकेट के चारों जानिब उन्होंने खुलकर स्ट्रोक्स खेले। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार आलमी कप अपने नाम कर लिया है। भारत में शिकस्त दी है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां सभी की जानिब से तवक्को की जा रही थी। क्रिकेट पंडित्स की जानिब से कहा जा रहा था कि भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, जिसे कहते हैं कि जिस दिन ज़रूरत थी एक्शन दिखाने की, उस दिन एक्शन दिखाया और भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इब्तिदा से 240 रन तक भारत को महदूद किया गया। मिचेल स्टार्क की जानिब से 3 विकेटें हासिल की गई, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड की जानिब से 2-2 विकेटें हासिल की गई। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट हासिल की, एडम जंपा ने 1 विकेट हासिल की और फिर बैटिंग में हमने देखा कि इब्तिदा में 3 नुकसान उठाने पड़े ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फिर हमने देखा कि ट्रेविस हेड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यकतरफा तौर पर यह मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम साहब, बड़ा यकतरफा मैच हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये? वाकई में नहीं कर रहे थे कि इतना वन साइडेड मैच होगा। इसके बावजूद देखिए 240 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए। सिर्फ 240 रन ही इंडिया ने स्कोर किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया की बॉलिंग जिस तरीके से पूरे इवेंट में परफॉर्म कर रही थी, ये वन साइडेड मैच नहीं लग रहा था। फिर जब 3 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के चेस करते हुए, तो भी ये वन साइडेड मैच नहीं लग रहा था। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। सबसे पहले तो जो बड़ा क्रेडिट जाएगा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को जाएगा कि आज जो उन्होंने स्पेल किया है दरमियान में आके, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। वो था मार के जहां पर आके उन्होंने कोई एक सिंगल बाउंड्री कंसीड नहीं की, एक सिंगल लूज बॉल नहीं की अपने स्पेल में, और जो प्रेशर एज ए लीडर उन्होंने क्रिएट किया। देखें, जब आपके कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहे हो तो फिर बाकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड आपने देखा कैसे उन्होंने कैचेस दिए। ट्रेविस हेड ने जो कैच दिया था रोहित शर्मा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर हमने आज इंडिया की बैटिंग को बहुत ज्यादा फ्लैश करते हुए देखा, देखें श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूं, शुभमान गिल की मैं बात कर लेता हूं, सूर्या कुमार यादव की, इनके कैरियर का ये सबसे बड़ा मैच था। अब तक उन्होंने इतना बड़ा मैच नहीं खेला था और इनकी बैटिंग जो इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी, उसकी एक वजह ये थी कि विराट कोहली बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे और विराट कोहली जो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, तो ऊपर से शुभमान गिल हो या नीचे से श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो या सूर्या कुमार यादव हो, ये उनके गिर्द खेल रहे थे।
आज अनफॉर्चुनेट था कि वो इनसाइड एज लग गया था विराट कोहली का और वो आउट हो गए थे, लेकिन उसमें जो पैट कमिंस को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। जो मैंने सबसे पहले कहा कि बहुत बड़ा क्रेडिट, शायद ट्रेविस हेड से ज्यादा बड़ा क्रेडिट आज पैट कमिंस का है कि जिस अंदाज से उन्होंने टीम को लिफ्ट करके रखा, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम के मोरल को उठा के रखा, और जो उनका स्पेल था वो बहुत ही लाजवाब किस्म का स्पेल था कि जिसने कमिंस ने जो 2 for 34 इन 10 ओवर्स, वो बहुत ही क्रूशल उनकी बॉलिंग थी। और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि उस बॉलिंग के आगे जब ऑस्ट्रेलिया ने वो राउंड द विकेट आके मिचेल स्टार्क ने जो स्पेल किया था पुरानी गेंद से, फिर हमने सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए देखा। हमने आज अय्यर जल्दी आउट हो गए, आज केएल राहुल ने बैटिंग जरूर की लेकिन वो खुल नहीं पाए, ना केएल राहुल खुल पाए ना सूर्य कुमार यादव खुल पाए। तो एक चीज खुल गई कि जब प्रेशर पड़ा इंडिया की इस बैटिंग के ऊपर के जो गिर्द में चल रही थी विराट कोहली के और रोहित शर्मा के, वो आज कोलैप्स कर गई। देखे ना, हर मैच के अंदर विराट कोहली सेंचुरी नहीं करेंगे, हर मैच में रोहित शर्मा 80-90 रन नहीं करके देंगे। जो बैटिंग खेल रही है उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज जब बड़ा ओकेजन आया, बहुत बड़ा क्राउड बैठा हुआ था, बहुत दुनिया की नजरें जिस मैच पे थी, आज इंडिया की वो बैटिंग फ्लॉप हो गई जिसे फ्यूचर करार दिया जा रहा है बड़े मैच में। चाहे वो शुभमान गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल ने आज सियासत जरूर की है, लेकिन जो केएल राहुल का अपना स्टाइल है खेलने का, आज केएल राहुल ने वो बैटिंग नहीं की। आज वो बहुत ही फंस के खेले, शेल में चले गए थे, और यही हमने सूर्य कुमार यादव को देखा जिसकी वजह से ये टीम 300 रन पर नहीं जा सकी। और फिर ट्रेविस हेड, ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो बड़े मैचेस का प्लेयर है। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर आज फाइनल के मैन ऑफ द मैच। इसी साल वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप खेला का फाइनल खेला गया था इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, जहां 200+ रन से हराया था। आज भी वन साइडेड मुकाबले के बाद हराया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। बिग मैच, टीम खुद को साबित किया, सुपर विक्ट्री। हमारे साथ ही रहेगा नसीम साहब, एजाज बाकरी भी हमारे साथ हैं। एजाज, क्या समझते हैं आप, होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशंस और सारी ये फेवर्स आज काम क्यों नहीं आ सकी, आज ये जादू क्यों नहीं चल सका, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन देखने में मिली है ऑस्ट्रेलिया की जीत की शक्ल में? देखिए मावेश, ये आज इंडिया के साथ नहीं हुआ है, ये पिछले तकरीबन 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद इंडिया इसी तरीके से ही आईसीसी के टूर्नामेंट्स में नॉकआउट मैचेस के अंदर चोक करता चला आ रहा है। आप देखिए कि इंडिया जब भी, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मैं दोनों टीमों की बात कर लेता हूं, कि जब भी गोरी टीमों के साथ ये नॉकआउट मैचेस खेलते हैं तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर इंडिया 2011 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप धोनी की कप्तानी में जीता था तो अपोजिशन श्रीलंकन टीम थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले, हार गए। और अगर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में खेला तो वो भी इंडियन के साथ खेला, गोरी टीम नहीं थी। जो गोरी टीमें होती हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये नॉकआउट मैचेस के अंदर देखिए ये यहाँ से आपको फर्क महसूस होता है कि प्लेयर्स का ब्रॉटअप कैसे होता है, स्कूल लेवल में कितने वो स्ट्रांग होते हैं, क्लब लेवल, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर वो शील्ड क्रिकेट खेलते हैं। आज की जो मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीता है वो ट्रेविस हेड की उस प्रेशर की इनिंग्स का है, जिसने इस पूरे दोनों टीमों में 11-11 प्लेयर, 22 प्लेयर्स आज वर्ल्ड कप फाइनल में मैदान में उतरे हैं। वो सिर्फ ट्रेविस हेड का, कि वो जिस तरीके से मेंटली वो स्ट्रांग साबित हुआ है, और इंडियन जिस तरीके से इसी साल भी वो 2023 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप था, वो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, इंडिया वो भी फाइनल हार गया। लास्ट ईयर भी इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार गया है। तो ये एशियन टीमें जब भी नॉकआउट मैचेस में मध्य मुकाबले जाती हैं तो इनका इसी तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर है और इंडिया ने प्रेशर ले लिया। सही है। फिर ऑस्ट्रेलिया को आप ये भी उनको दाद दीजिए कि उनके कप्तान ने कप्तानी बहुत अच्छी की। सब लोग पैट कमिंस की तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसने आज अपनी टीम को खिलाया। ठीक है, एजाज सलाउद्दीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलाउद्दीन साहब, क्या कर दिया आज भारत ने? 9 मैचेस जीते, फाइनल में आए, लेकिन फाइनल हार गए। हाँ, लेकिन वो उन्होंने बड़ा कम स्कोर किया इंडिया ने। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि ये अनबीटन टीम थी अभी तक, लेकिन क्रिकेट में यही होता है कि एक मैच अगर आप खराब खेलें तो बस वो आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं था।
इंडिया के लिए। हालांकि क्राउड फुल था, आपने देखा कि 1 लाख बता रहे हैं, कितने 30,000 लोग थे, 1,32,000 थे। हाँ, और जनाब ये देखिए कि वो उन्होंने किस तरीके से आज उन्हें वो किया है। ऑस्ट्रेलियंस को पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने, उनको कम स्कोर इतना नहीं था, बिल्कुल 41 ज्यादा स्कोर तो नहीं होता ना, तो बिल्कुल इसमें तो 300 प्लस होना चाहिए। अच्छा सलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, आज की जो पिच थी फाइनल के हिसाब से सही थी, और जितना ब्रेव डिसीजन लिया पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग की पहले? या वो डिसीजन बहुत अच्छा था। वजह ये है कि वहां पर आप देखें शबनम बहुत गिरती है, ड्यू फैक्टर आ जाता है। जब ड्यू फैक्टर आता है तो दूसरी मरतबा जब आप फील्डिंग करते हैं तो आपको गेंद जरा सोपी हो जाता है, वो हाथ पे पूरी तरह ग्रिप नहीं कर पाता उस पर, खासतौर पर रिस्ट स्पिनर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता, फिंगर स्पिनर तो फिर भी जगह पे गेंद कर लेता है। तो वो डिसीजन अच्छा था, बहुत अच्छा डिसीजन था टॉस। अच्छा सलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, जो भारतीय बॉलर्स थे वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इब्तिदा में 3 खिलाड़ी भी आउट कर लिए, हम देख रहे थे ऑस्ट्रेलियावी जो बॉलर्स थे वो बॉलर जो मुख्तलिफ तरह की जो बॉल्स थी वो कर रहे थे, कभी स्लो कर रहे थे, कभी बैक ऑफ लेंथ कर रहे थे, कभी ओवर पिच कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि भारतीय जो बॉलर्स हैं उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, इसलिए कि शुरू में तो जब 3 आउट हो गए तो बुमराह इनका अच्छा बॉलर है, इंडियंस का ना, जो पेस बॉलर है ना, मीडियम फास्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन इनके स्पिनर से कोई खास अच्छी गेंद नहीं की। हालांकि मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को पे इनको स्पिनर्स पे सबकत हासिल थी, लेकिन इनके स्पिनर्स भी आज तो खातिर खा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं सलाउद्दीन साहब की ड्यू फैक्टर था, या फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने का प्रेशर ले लिया, या फिर अपने होम क्राउड की वजह से फाइनल खेलने का प्रेशर लिया? नहीं, देखें, ये प्रोफेशनल क्रिकेट में प्रेशर तो आपको लेना पड़ता है। कितना बड़ा इवेंट था, मतलब इससे बड़ा तो इवेंट होता ही नहीं। वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं तो उसमें प्रेशर वगैरह जो कहे कि वो प्रेशर ले रहा है तो मेरे ख्याल में अनप्रोफेशनल बात है। वो प्रोफेशनल्स को प्रेशर लेना पड़ता है, और जो प्रेशर ले लेता है वही अच्छा खेलता है फिर। अच्छा सलाउद्दीन साहब, जब भारतीय बैटिंग जारी थी, विराट कोहली 50 स्कोर कर चुके थे, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस की जानिब से फैसला किया गया, वो खुद बॉलिंग पर आए और उस वक्त वो अहम विकेट हासिल की, और कोहली बड़े सेट हो चुके थे, अगर वो क्रीज पर रुकते तो मेरे ख्याल से 300 तक पहुंच सकते थे भारत। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोहली आज बहुत ही स्लो खेले। उन्होंने प्रेशर लिया या जो भी लिया, वो मेरे ख्याल में वो इनके स्ट्रोक्स नहीं थे जो आमतौर से विराट कोहली खेलते हैं जिस तरीके इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ये तो दो बातें हैं नहीं इसमें, लेकिन आज वो वैसा नहीं खेले जैसा कि अमूमन खेलते हैं वो। जी बिल्कुल, यही देखने में आया कि दीगर टीमों के साथ खेलते हुए इंडिया, सलाउद्दीन साहब 350, 400, 300 तक का स्कोर कर रहा था, लेकिन आज फाइनल में जब इस स्कोर की जरूरत थी तो वो बिल्कुल ही 240 पे रुक गए आके। हाँ, यही आप सही कह रही हैं, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, इसलिए कि ये जो स्कोर था ये इतना नहीं था, 300 प्लस करना चाहिए था इन्हें। सही। एजाज, आज की फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया की बड़े रन्स रोके हैं फील्डिंग में, बेहतरीन कैच भी लिया ट्रेविस हेड ने। देखें, जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग की है, मैं जैसे पहले बता रहा था कि उसने ये किया है कि वो मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है बाकी जितने भी आज 21 प्लेयर खेले हैं उनके मुकाबले में, और इंडिया को अर्ली 3 विकेट जरूर मिले थे, लेकिन इंडियन आप देखें जब पहली इनिंग्स खत्म हुई थी तो इंडियन क्राउड, उनके कप्तान, उनके प्लेयर्स, जहाँ पे जो बॉलीवुड स्टार्स बैठे हुए थे, उन सबको तवक्को थी कि रिजल्ट यही निकलेगा, क्योंकि 240 रन वर्ल्ड कप के फाइनल में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया भी वो टीम जो कि वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैच सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हारा था। इंडिया, हमें ये लगता है कि इंडिया अनबीटन चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखिए कि वो अपना वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच इसी इंडियन टीम से हारे और उसके बाद साउथ अफ्रीका से हारे, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान वाले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी की, वहां से जो उनको बूस्ट मिला वो उसको एंड तक कैरी किया है। और मेरा इस पे अभी भी यही मानना है कि ये जो इंग्लिश टीमें होती हैं ये एशियन टीमों को नॉकआउट मैचेस के अंदर पकड़ लेती हैं। पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से जीता था, इंडिया भी वर्ल्ड कप श्रीलंका से जीता था, और अभी आप देख लें 1 महीना पहले इंडिया ने 15 ओवर के अंदर 55 के ऊपर पूरी श्रीलंकन टीम को एशिया कप के फाइनल में आउट कर दिया है।
लेकिन आप इंग्लिश टीमों से जब मुकाबला करते हैं और इसी तरीके से जब फाइनल में टफ मुकाबला होता है तो वो पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान हो या इंडिया, उससे आगे निकल जाते हैं। हमारे सामने 1999 के वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल है। वसीम अकरम के पास इतनी बड़ी टीम थी और टॉस जीत के हमने बैटिंग की, वहां पर जिस तरह का विकेट था लॉर्ड्स के अंदर 1999 में 150 रन भी पाकिस्तान ने नहीं किए थे और स्टीवा वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। 2003 का आप वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए कि सौरव गंगुली की टीम भी इसी तरीके से वर्ल्ड कप के पूरे 9 मैचेस जीत के फाइनल में आई और रिकी पॉन्टिंग ने पहले बैटिंग की, टॉस जीत के 345 रन ऑस्ट्रेलिया ने किए थे और इंडिया फाइनल हार गया था। और फिर एशियन टीमों को ये डिसएडवांटेज है कि उनके प्लेयर्स की इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये एग्जांपल आप बार बार आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता है। आखिर कोई एक वजह तो है जो जिसको उसको बाकी टीमों के ऊपर इतना आगे लेके जाते हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप का आगाज तो उनका भी अच्छा नहीं था। जी सही। सलाउद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे, इब्तिदा में जो जिस तरह की बॉलिंग की गई भारतीय बॉलर्स की जानिब से, 3 खिलाड़ी आउट कर दिए गए, 16 पर पहली, 43 पर दूसरी, 47 पर तीसरी, लेकिन फिर हमने देखा कि बुमराह को हटा दिया गया और फिर स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या थोड़ा जल्दी स्पिनर्स को ले आए, रोहित शर्मा देर से लाना चाहिए था? बुमराह गेम अच्छी कर रहे थे और उनको और मजीद कुछ ओवर देना चाहिए थे ताकि वो आउट तो कर लिया था, जैसे आपने फरमाया कि 3 तो आउट कर लिए थे उन्होंने, तो बुमराह से गेंद कराते क्योंकि वो उसका हाई आर्म एक्शन भी है और वो गेंद भी मूव करता है ऑफ द विकेट। सही। एजाज, आप क्या कहेंगे, जिस वक्त बुमराह बॉलिंग करा रहे थे स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था उस वक्त या नहीं करवाना चाहिए था? एजाज, आवाज आ रही है आपके पास? ठीक है। सलाउद्दीन साहब, पैट कमिंस की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और वो जो एक मिडिल फेस था इनिंग का भारतीय, उसके अंदर आके उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की और एक अहम विकेट कोहली की हासिल की, उस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि उनकी कप्तानी भी बहुत अच्छी थी और टॉस जीत के जो डिसीजन लिया वो भी बहुत सही था। तो ये कमिंस को बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि देखिए क्रिकेट खेलना एक अच्छा खिलाड़ी अलग होता है मगर कप्तान बिल्कुल डिफरेंट होता है। कप्तान अगर अच्छा हो तो पूरी टीम यकजा होकर खेलती है। आपने माजी में भी देखा, जैसे हमारे बहुत पहले की बात करता हूँ, कारदार साहब थे उस जमाने में, 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद, और इन्हीं से ये लोग मैच जिता देते थे। तो कप्तानी एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट वो होता है, इसलिए कि जब आप अच्छी कप्तानी करेंगे आपको पता वो होना चाहिए कि किससे हमें किस प्लेयर से कैसे काम लेना है, किसी को डांटना है, किसी को इनकरेज करना है, किसी को आपको और शाबाशी देनी है। वो आपको एक साइकोलॉजिस्ट जैसे होता है, उसको हर खिलाड़ी का पता, नफ्सियात पता होनी चाहिए उसे। लेकिन सलाउद्दीन साहब, आज जो इंडियन प्लेयर्स हैं साइकोलॉजिकली वो तो लगता है कि अंडर प्रेशर चले गए और पॉजिटिवली या प्रोडक्टिवली उन्होंने ये प्रेशर नहीं लिया। जैसे कि आप कह रहे थे कि बड़ी टीमें प्रेशर लेती हैं और फिर ही अच्छा खेलती हैं, लेकिन आज मामला कुछ ऑपोजिट हो गया इंडिया के साथ। हाँ, कुछ इंडिया हालांकि एक भी मैच नहीं हारे हुए थे, तो ये जाहिर है फेवरेट शुरू हुआ मैच तो फेवरेट तो इंडिया थी। अगर आप देखें क्रिकेट के उससे तो फेवरेट इंडिया थी और फिर क्राउड उनके साथ, पिच भी आपके मतलब की सब कुछ आपके हक में था, लेकिन वो इसका क्रेडिट जाहिर है ऑस्ट्रेलियंस को जाता है जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को टैकल किया आज। सही। एजाज, केएल राहुल की आज की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ 66 रन बनाए और उन्होंने 107 बॉलों का सामना किया। बड़ी जो पेस था एक भारतीय टीम की इनिंग का, वो बड़ा खत्म हो गया था उनकी इस इनिंग की वजह से। क्या कहेंगे? देखें, जिस बहरान के अंदर वो बैटिंग कर रहा था और जिस तरह के स्लो विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीत के बहुत बड़ा डिसीजन किया कि इंडिया को पहले बैटिंग कराई, उस विकेट पर केएल राहुल तो मजहमत नहीं रहा है। उसकी इनिंग्स के ऊपर तनकीद इसलिए नहीं बनती है क्योंकि उसने जिस हालात के अंदर बैटिंग की है वहां पर देखें, मैंने पहले भी बताया कि 29 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिर्फ 2 चौके इंडियन बैट्समैन लगाने में कामयाब हुए, 2 चौके। बिल्कुल। और 107 बॉलों पर उनकी जानिब से, राहुल की जानिब से सिर्फ 1 चौका लगाया गया, 1 बाउंड्री उनकी जानिब से लगाई गई। तो इसलिए देखें तो थोड़े डिसएडवांटेज में इंडियन टीम जरूर रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके से इंडिया ने सबसे ज्यादा 10 मैचेस जीते,
सबसे ज्यादा विराट कोहली ने 765 रन स्कोर किए। सबसे ज्यादा छक्के जो थे वो रोहित शर्मा ने 31 लगाए। सबसे ज्यादा विकेटें 24 मोहम्मद शामी के पास है। सबसे बेस्ट फिगर इनके पास है। सबसे ज्यादा नो मेडन ओवर्स अगर किसी बॉलर ने इस वर्ल्ड कप में कराए तो वो बुमराह ने कराए हैं। तो ओवरऑल इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जिस लेवल की क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से इंडिया को रोका है, और उन्होंने इंडिया से मैच हारने के बाद जो कम बैक किया था और पूरी प्लानिंग के साथ खेले, और उनको इस बात का अंदाजा था कि हमने दूसरी इनिंग्स में क्या करना है। 3 विकेटें गिरने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 ओवर बीच में ऐसे खेले 2 स्पिनर्स के, जहां पर उन्होंने अपने बैट को रोका है। उसके बाद उन्होंने इंडिया को डोमिनेट नहीं होने दिया है। सो ऑस्ट्रेलिया को भी हमें शाबाश देनी चाहिए। इंडियन गो के बहुत बुरी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन कंडीशन ऑस्ट्रेलियंस ने अपने यहाँ कन्वर्ट कर ली थी सारी, और इतना बड़ा क्राउड जो बैठा हुआ था उसका भी प्रेशर इंडियन टीम पे मजीद पड़ा जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग अच्छी की। अच्छा, ये क्रेडिट तो वाकई आज इजाज ऑस्ट्रेलिया को जाता है कि जो फेवर्स इंडिया अपने क्राउड, अपनी पिचेस और अपने होम ग्राउंड से लेता रहा है, आज वो सारे फेवर्स मैजिकली ऑस्ट्रेलिया ने अपने हक में टर्न कर लिए, और जो उन्हें एक एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए थी इंडिया को अपने होम क्राउड से, लेकिन आज वो उनके ऊपर प्रेशर बन गया। अब बिल्कुल ऐसे ही होता है, और ये एशियन टीमों ये ऐसी करती हैं। इनके प्लेयर्स के अंदर एक चीज होती है, हारने का खौफ ये बैठा रहता है। इवन फैंस में भी बैठा रहता है। मावेश, आपने आज भी 8 घंटे का मैच देखा है। जब 1 बजे इसका टॉस हुआ, मैच शुरू हुआ, तब से लेकर और उनके फैंस जो थे वो स्ट्रेस में ही रहे। वो इस मैच में वापस आने की कोशिश करते रहे, और ऑस्ट्रेलियन उनसे आगे ही रहे हैं। तो बेहतर तो ऑस्ट्रेलिया खेला है। ऑस्ट्रेलिया को जनरल दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक टीम जिसकी कंडीशन अपनी थी, जिन्होंने पिचेस अपनी। इस वक्त मैच सेरेमनी जारी है। रवि शास्त्री इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। For putting on a great event. I would like to introduce the presentation party today. To my left, first I have Mr. Greg Barclay, Chairman of the ICC, Mr. Jay Shah, the Honorary Secretary of the BCCI, Mr. Sachin Tendulkar, the Tournament Ambassador, Mr. Roger Binney, President of the BCCI, and Mr. Jeff Allardyce, ICC Chief Executive. Firstly, I would like to invite the match officials to collect their medals from Mr. Jeff Allardyce, the ICC Chief Executive. We start with the match referee, Andy Pycroft. And now the on-field umpires, Richard Illingworth and Richard Kettleborough. Richard Illingworth, please. The TV umpire, Joe Wilson. And the fourth umpire, Chris Gaffney. Now is the time to award the player of the match. And to present this, we have Mr. Sachin Tendulkar. There were some notable performances in this game today, but it was one man who stole the show. Travis Head, for 137 of just 120 balls, 15 fours and 4 sixes, is the man of the match in the World Cup final. Well, the next award is for the player of the tournament. And the jury for this award comprised of Mr. Ian Bishop from the ICC TV commentary team, Ms. Cass Naidu. This half-hourly clock is brought to you by कोई हार्ट स्मेल नहीं देती गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ and इनवरेक्स सोलर एनर्जी, दिल की फिक्र से बेफिक्र। Right through the World Cup, the player of the tournament for being the most consistent player, Virat Kohli.
765 runs and 300s, marking his tournament. He collects the award from Mr. Roger Binny, the president of the BCCI. They may have come second best today, but congratulations to India for their part in this tournament. They've been superb and have added a lot to the event. May I now invite the Indian team to come up to collect their medals from Mr. Jay Shah, the Honorary Secretary of the BCCI. We start with Ravichandran Ashwin. Mr. Jasprit Bumrah. Mr. Shubman Gill. Shreyas Iyer. Ravindra Jadeja. Ishan Kishan. Virat Kohli. Prasid Krishna. KL Rahul. Another man who's had an outstanding tournament, Mohammad Shami. Mohammad Siraj. And Shami. Shardul Thakur. Kuldeep Yadav. Surya Kumar Yadav. And the captain, Rohit Sharma. Well, I'd like to ask Rohit, come up, please. Well, Rohit, tough luck. You can hold your head high with the way you played, but on the given day, Australia were too good. Yeah, I mean, look, honestly, the result has not gone our way. Obviously, we know that we were not good enough today. But again, I think really proud of the team, how we played from game one. Just wasn't our day. We tried everything we could from our side. But yeah, wasn't supposed to be. 240 you got. What do you think was par for the course there? Yeah, honestly, I mean, 20-30 more would have been good. We spoke around 25-30 overs when KL and Virat were batting. I thought, you know, when they were batting, they were stitching a good partnership there. And then they just needed to bat as long as possible. We were looking at 270, 280 at that point, but then we kept losing wicket. We couldn't stitch a big partnership there. And that's exactly what Australia did to win the game. They stitched a big partnership after that 3 wickets. 47 for 3 you had Australia. What was going through your mind at that stage? No, look, obviously that was the plan. You know, when you have 240 on the board, you want to take wickets as early as possible, and we did that. But then again, credit to, you know, those 2 guys in the middle, Travis Head and Manas. They stitched a big partnership and put us completely out of the game for us. But again, we tried everything we could. You know, but I thought the wicket got slightly better to bat under the lights. I was coming to that. Thoughts on the pitch? It was slow first up, and then you know, 20 overs or so when Australia batted, came on nicely. Yeah, I mean, obviously we knew under the lights it would be slightly better, but
again, don't want to give that as an excuse. We didn't bat well enough to put enough runs on the board. And then with the seamers up front, we got those 3 wickets where we thought, another wicket there, we can open up the game. But again, credit to those 2 guys in the middle for stitching that big partnership. Well, you can hold your head high. Rohit, it's been an outstanding 1.5 months. You guys have played fantastic cricket, and some of your boys have been simply outstanding. Tough luck today. Thank you. Well, Rohit Sharma, captain of the Indian team. And I'd now like to ask the victorious Australian team to come up and receive their medals from Mr. Greg, the ICC chairman. We start with Sean Abbott. Mr. Alex Carey. Mr. Cameron Green. Joss Hazelwood. Travis Head. Josh Inglis. Manas Labuschagne. Mitchell Marsh. Glenn Maxwell. Steve Smith. Mitchell Stark. Marcus Stoinis. David Warner. Adam Zampa. And the captain, Pat Cummins. I'd now like to ask Pat Cummins to come and have a chat, please. Pat, you'll be chuffed to bits with the way your boys played, just rose to the occasion on the big day. Yeah, that's it. I think we saved our best for last. And yeah, a couple of big match players stood up and yeah, we're pretty chuffed. Brave decision at the toss. You seemed pretty confident when you said you wanted to field first. Yeah, we're tossing it up. We've been batting first pretty much for the whole tournament. Today we thought, it was a good night to chase down. We thought it might actually get a little bit easier to play, and everyone was pretty keen to get out there. What do you make of the pitch when you started bowling, the pace of the track? It was a bit slower than I thought. Didn't particularly spin probably as much as we thought either. And I thought everyone adjusted pretty well and bowled some tight lines. When you came into bowl, you were the first bowler who adjusted your lengths.
you brought it back and hit the deck. Yeah, on a slow wicket like that, it's pretty variable bounce. So we thought a couple of catches on the leg side. Yeah, you know, you've got to score runs in ODI cricket, so put a few catches there, make them make a couple of decisions. As a captain, you would have been delighted with the way your guys fielded in that first 1 hour of play. They were desperate and they were brilliant. Yeah, desperate for sure. I think it all started last week against South Africa. The boys were fantastic, and yeah, we've got an ageing side, but everyone still throws himself around in the game when you've got a big stadium like this packed. What were you happy restricting India to? In the end, it was 240. Yeah, really chuffed with 240. I think probably anything under 300, really. You know, I thought 300 might have been tough, but achievable on that wicket. So we're really happy with 240. Now, to win a World Cup final, you've got to show character. And at 47 for 3, you know, there might have been a few, you know, your hearts fluttering there, but that partnership was magnificent. Yeah, I was one of those blokes with the hearts fluttering upstairs. I was pacing. Magnificent. You know, Marnus walked in and he had a cool head straight away, and Trav just does what he does. Really brave again. He takes the game on, puts the pressure back on the bowlers, and to do it on the biggest stage, I mean, shows a lot of character. No, but when you look at Travis Head, you know, he missed the first half of the tournament. He comes in, gets 100, and he finishes off with 100, and in blazing fashion on a big stage. Oh, amazing. And I think, you know, the unheralded few, the you know, the selectors that backed him in, even when he was at a broken hand, and the medical team to get him back. It was a big risk that we took, and it paid off. And yeah, you couldn't be happy for Trav. He's a legend. We love him, and I mean, how fun is he to watch? Now, this is probably the biggest crowd we've seen for an international match, and it happened to be a World Cup final, close to 125,000 people. What did it feel like? It was awesome. I must say, I was pretty happy they were silent for a lot of the bowling innings. A couple of times they got loud, and it was really loud, but fantastic. I mean, the passion in India is unrivaled around the world, and I think it's amazing that every single person's wearing the blue shirt. So you look around, and it's a pretty special moment. One that, whatever the result happened, we're never going to forget a day like today. Now, what did you tell your boys? You lost the first 2 games, and then to bounce back and recover in the manner you have, winning 9 on the trot. What was the message for those 2 games? You know, you've got to go and win a World Cup. You just can't wait for it to happen. And I think you've got to be brave at times. You've got to take the game on. And there was a real shift after those first 2 games. With our batting particularly, you saw the openers going really aggressive. And that pretty much didn't waver from that for the rest of the tournament. And it was total buy-in from everyone, and in the end it worked. It's a great 6 months for you. World Test Championship, now the World Cup. Oh yeah, crazy. I mean, yeah, this year will be a year we remember for a long, long time. Yeah, it's been awesome. It's been pretty much spent the whole Aussie winter away overseas playing, but we've had a lot of success, and this pips it all. This is top of the mountain. Well, Pat, thanks a lot. Hang in here. It's the opportunity to call the Honourable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, onto the stage, please. And we'll also invite Mr. Richard Marles, the Deputy Prime Minister of Australia. So the Honourable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and Mr. Richard Marles, the Deputy Prime Minister of Australia. Well, thank you, Pat. I'd now request you to go and collect the World Cup from the Honourable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. And congratulations to Australia. And it's many congratulations to Australia.
What a proud moment for Pat Cummins as he waits for his team to come onto the stage with him, and they will all be part of this celebration. This is the moment when Australia can celebrate as a unit. Up she goes, Pat Cummins, up she goes. And Australia and all its gold ticker tape finally get to lift this World Cup. 48 games. It's been a marathon. And at the end of it, they brush the tape with ease. Outstanding performance from a top-class squad. Something leads everyone to believe that this is just the very start of the party. Now up on stage, of course, all the support group as well, which will include the coaches, batting coaches, fielding coaches, physiotherapists, press managers, doctors, trainers, strategists, analysts. A veritable A380 full of squad. And they are all part of this amazing feeling that Australian teams have got to do on a regular basis when it comes to the Cricketing World Cup. Photo after photo will be beamed around the world. This coverage is still going to many, many countries. And the smiles won't be disappearing for quite some time, you imagine. Champions, one and all. Ten teams came in hope of lifting that trophy, but only one can. It wasn't the people's choice, not the people of this country anyway, but it was certainly the team that handled the pressure the most when it counted the most. Pat Cummins and Australia jubilant in the 2023 ICC Cricket World Cup. Spectacular right from ball one at this very ground where New Zealand took on and beat England to set the tone. Australia dropped their first two games, and at that point everyone thought, what would become of one of the tournament favourites? Well, we know that they're fighters, and they turned the corner in a match in Lucknow and they never looked back. So many great performances from so many great performers. Let's relive some of the magic moments as they continue their celebration. Some great performances. First up, let's look at the scorer of the most runs. Virat Kohli, player of the tournament. Three centuries,
He won the most runs by quite some margin when you look at the other performers, Rohit Sharma, Quinton de Kock. What a tournament Quinton de Kock has, as he said goodbye to 50 over cricket. And Rachin Ravindra and Daryl Mitchell from New Zealand also major contributors. What about the most wickets? Mohammad Shami missed the first 4 games and then hit the ground running from the very first ball when he got rid of Will Young there. He never looked back. ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल कर ली है और आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का खेल पेश किया, ट्रूली डिजर्व करते थे वो इस ट्रॉफी को। और पैट कमिंस ने ये ट्रॉफी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हासिल की और भारत को शिकस्त देकर हासिल की। 6 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का आलमी कप जीता है। 1987 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 1999, फिर उसके बाद 2003, 2007, फिर उसके बाद हमने देखा कि 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया और अब ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत को शिकस्त दी है और एक अनहोनी को मुमकिन कर दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। हाय गर्ल्स, आई लव गोइंग आउट, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए पामोलिन नेचुरल्स मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, सो सॉफ्ट, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। टेलीनॉर 4G लाइव मंथली एक्सट्रीम प्रो मैक्स ऑफर, जिससे मिले 100 GB डेटा पूरा महीना, दिन हो या रात, और तमाम नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉल्स का मोर से ज्यादा फायदा, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री, और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री, और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री, और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। लिंक भेजना। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री, और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा 2000 ऑल नेटवर्क मिनट्स एंड SMS सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। तो देखो हर मैच तमाशा ऐप पर बिल्कुल फ्री। पेश है नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। टेलीनॉर 4G लाइव मंथली एक्सट्रीम प्रो मैक्स ऑफर, जिससे मिले 100 GB डेटा पूरा महीना, दिन हो या रात, और तमाम नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉल्स का मोर से ज्यादा फायदा, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। पेश है नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। लिंक भेजना।
लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा, 2000 ऑल नेटवर्क मिनट्स एंड SMS सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। तो देखो हर मैच तमाशा ऐप पर बिल्कुल फ्री। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा, सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा, सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा, सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। टेलीनॉर 4G लाइव मंथली एक्सट्रीम प्रो मैक्स ऑफर, जिससे मिले 100 GB डेटा पूरा महीना, दिन हो या रात। और तमाम नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉल्स का मोर से ज्यादा फायदा, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा, सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। टेलीनॉर 4G लाइव मंथली एक्सट्रीम प्रो मैक्स ऑफर, जिससे मिले 100 GB डेटा पूरा महीना, दिन हो या रात। और तमाम नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉल्स का मोर से ज्यादा फायदा, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। हाय गर्ल्स, आई लव गोइंग आउट, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए पामोलिन नेचुरल्स मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा, सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। सुबह हुई नहीं और इन मस्ती खोरों की मस्ती शुरू। अभी थोड़ी देर में देखना इनका ड्रामा। मिलिए एनी मैडम से, कैरमल से ज्यादा स्वीट। ये है चॉकलेटी हीरो असद, जो हेजलनट जैसे हैं नटखट। इनका दिन शुरू होता है चोकोलोवो स्प्रेड से। चॉकलेट जैसा नहीं, चॉकलेट ही तो है। लगाना इतना आसान कि हाथ रुक ना पाए। टेस्ट इतना चॉकलेटी कि मजा आ जाए। इन मस्तीखोरों के लिए मेरी चॉइस चोकोलोवो, चॉकलेट ही तो है। मेरी स्माइल है मेरा एक्शन, और इसका सीक्रेट डॉक्टर लॉन्ग का क्लो फ्लो एक्शन, यानी फ्लोराइड के साथ साथ लॉन्ग भी, जो किसी और टूथपेस्ट में नहीं। कैविटी प्रोटेक्शन, मजबूती, फ्रेशनेस, कॉन्फिडेंस। आजमा लीजिए, मेरी गारंटी है आप अपना टूथपेस्ट कभी नहीं बदलेंगे। डॉक्टर लॉन्ग, व्हाट्स योर एक्शन? इसका रेट, उसका रेट, सबका अपना अपना रेट। इस रेट के चक्कर को करे रफ्फू चक्कर, क्योंकि सिर्फ रावी एक्सचेंज ही देता है करेंसी की खरीदो फरोख्त पर बेस्ट रेट्स। बैरून मुल्क जाने और पाकिस्तान आने वाले ट्रैवलर्स को हमारे मुल्क भर में फैले ब्रांचेस के वसी नेटवर्क से बेस्ट रेट्स हर बार पूरी गारंटी के साथ। काबिले भरोसा खिदमत के लिए रावी एक्सचेंज, राब्ता मुस्कुराहटों का। Can celebrate as a unit.
Up she goes, Pat Cummins. Up she goes. And Australia and all its gold ticker tape finally get to lift.